market and the official rate. तो उसकी वजह से stabilization हो गई है. There's a lot of confidence, and clearly it has helped not only restore the confidence but brought down the cost of doing business in these last few months. आपको पता है, one of the most important elements is also a collective wisdom of few entities together. Trade deficit now is 30% on a year-on-year, reached about 1.9 billion, which is less than 2.7 billion जो corresponding period of last year. इसी तरह, although we had a rocky start on the exports, but the exports have grown 27% to 2.8 billion, और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी interface रहा है with the industrialists and also with the external, with different trading partners of ours, और काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं जिससे हमारी export potential and export market इंशाल्लाह बढ़ेगी from what we have made an effort to achieve. Now also, आपने सुना होगा Pakistan Stock Exchange, and one of my colleagues is sitting here from PSX. I think from a very low, we were able to, or it was only the good sentiments that helped us take the Pakistan Stock Exchange Index to over 63,000 plus. Now, of course, today it's 62,393 index. I have to say that there has been reform in virtually every segment of the economy, and I'd like to share that before I go into what we call in our corridors the most difficult and most penetrating, but number one problem is domestic resource mobilization in this country. So I'll touch that at the end, but let me share with you some of the achievements of the finance division that I represent, more the Ministry of Finance. Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PSX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. And I can go on and on in terms of the fiscal challenges that we faced. Now, obviously we did a lot of work. उसकी वजह से जो सबसे बड़ी achievement हमारी थी कि IMF की जो standby arrangement है, जो was negotiated by the previous government, उसको हमने बगैर किसी noise के उसको deliver किया है. And then we were able to bring in 700 million, but this was, of course, in January 2024. We were hoping it will come earlier, but उनके processes and procedures की वजह से थोड़ी देर हो गई इसमें. I can tell you that we also, because this was getting delayed, we have worked incredibly hard कि हम World Bank, Asian Development Bank, Asia Infrastructure Bank, उनके जितने भी quick dispersing assistance थे, उनको हमने fast track किया. We made sure that we had adequate representation on the board of these multilaterals to be able to get the release in time. So
we got, fortunately, because of that work, thoda sa IMF delay bhi hua, so we got 1.6 billion in December itself. And if you had been in Ministry of Finance, you would have appreciated कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने उसको डीलिंक करवा दिया IMF के प्रोग्राम से, जो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. The government also successfully curtailed the fiscal deficit at 1.3% of GDP during July-November 2024 in the presence of significant rise in markup expenditures. और मार्कअप का तो आपको पता है, it hits you and it hits us. ये इंटरेस्ट रेट जो हाई हैं, ये एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसने गवर्नमेंट के जो डेट है, डोमेस्टिक डेट को भी बहुत इंक्रीज कर दिया. न सिर्फ आपकी बिजनेसेस इफेक्ट हो रही हैं, बट इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग द डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ मार्जिनल बेसिस. इस वक्त जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बेसिकली बोरो कर रहे हैं टू पे आवर लायबिलिटीज. Incremental growth in the real debt is limited. I can assure you of that. On external front, हमारा current account deficit during July-December fiscal year 2024 has been narrowed down by 71.1% to 831 million. Against a deficit of 3.6 billion during the same period last year. This improvement is attributed, of course, to the 35.2% decline in trade deficit. इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ काफ़ी हुई है. I'm very conscious of the fact, और क्योंकि आपको LCs खोलने में मुश्किल आ रही थी, but हमने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक को to relax the opening up of the LCs. Of course, स्टेट बैंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, एंड दे रियली हैव टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हम लेकर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बट डे टू डे मैनेजमेंट वो करते हैं, तो हमारी उनसे काफ़ी क्लोजली बातचीत होती है. आपको एक खबर पता तो चल गई होगी, बट लेट मी मेंशन के वी 2016 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ था, और इसका बिल 2022 में इनैक्ट हो गया था इन अक्टूबर 2022. द बैंक अब अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं. एक जानिब कराची के मनाजिर, जहां निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. दूसरी जानिब लकीब मरवत के मनाजिर, जहां पर जलसे का एहतमाम किया गया है. JUIFA की जानिब से सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं. और पाक पतन से खबर यह कि पसंद की शादी करने वाली लड़की को अदालत पेशी के वक्त कत्ल कर दिया गया है. ये वाकया पेश आया है पाक पतन में, जहां पसंद की शादी करने वाली लड़की को अदालत पेशी के वक्त कत्ल किया गया है. पुलिस का यह बताना है लड़की पसंद की शादी उसने की थी, अदालत पेशी के दौरान